से पिकअप कर लेंगे. Okay. Okay, let me go to the next. Okay, so ये एक स्लाइड है. Okay. So ये स्लाइड मैंने इसके लिए रखा है कि I wanted to show the impact of data and AI, which is being done at an industry level. Right? So these are the graphs which are जो market से लिए हुए हैं. Okay. So if you see यहाँ पे AI का है, right? So अगर AI के software market में revenue, so this is basically a revenue number for AI softwares worldwide, right? So अगर आप देख सकते हो the revenue on the left hand side is in billion USD, right? तो इस अभी हम लोग कहाँ पे है 2022 में. So it is the data point what I'm trying to talk about over here is that कि अगर आपकी कोई कंपनी है, राइट, जो AI के सॉफ्टवेयर बनाती है, राइट, तो उसका मार्केट आज के डेट में टोटल मार्केट वर्ल्ड वाइड इट इज अराउंड 50 मिलियन. ओके, सो इसके लिए अगर किसी कंपनी को अगर वो इतना रेवेन्यू कमा रही है, एंड दिस इज इवेंचुअली गोइंग टू इंक्रीज फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स. सो अगर आप देख सकते हो अभी आज $50 million है, $50 billion है. In 2025 it is going to be somewhere around $125 billion. ठीक है, and this is the revenue which is earned by selling AI software. Okay. There is another statistics which I have not captured over here, जो वो ये बताता है कि AI से world economy पे कितना impact करता है, right? So the AI impact onto world economy is into trillions of dollars. आप गूगल करके देख सकते हैं, राइट? जब एक इंडस्ट्री में एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर अगर इतना सारा रेवेन्यू है और इतना सारा इम्पैक्ट है, सो देयर इज ऑलवेज डिमांड ऑफ दोज पीपल, राइट? कि अगर एआई सॉफ्टवेयर बनाना है तो मुझे एआई के जानने वाले लोग चाहिए, राइट? ये अगर आप देख सकते हो, this is a sudden, not a sudden spurt, but it is like gradual growth which is happening from past few years. Okay, अभी भी आज की तारीख में आपको अगर आप आपकी कंपनी के अंदर अगर आपका कोई है जो हायर करता है एआई के लिए या डेटा के लिए, it is one of the hottest skills in the market. Okay. एंड सो यहाँ पे मैंने AI के बारे में बात किया, राइट? अभी फिलहाल में देयर इज अ कंपनी नोन एज फ्रैक्टल एनालिटिक्स, राइट? दे अचीव्ड अ यूनिकॉर्न स्टेटस. इट इज अ स्टार्टअप, इट इज देयर इन मुंबई. ओके, सो उसका जो को-फाउंडर ने क्या बोला था, फ्रैक्टल इज प्राइमरली इनटू एनालिटिक्स एंड AI. ओके, बट उसके को-फाउंडर ने क्या बोला कि माय एक्सपीरियंस इज दैट फॉर एवरी $1 ऑफ AI स्पेंड यू नीड $10 of engineering spent to make it work, right? अगर मेरी and I'll try and correlate this statement with this graph on the left hand side. तो ये क्या बता रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस से कि अगर कंपनीज अगर billion of dollars अगर इन्वेस्ट करती है, अगर $1 billion इन्वेस्ट करती है, right? So they will also have to invest. They will also have to spend around $10 billion to ensure that the engineering work, right? To make that AI to production, okay, or to make that data ready for AI, right? So the idea is that data needs to be in shape for AI to give you insights. Okay, so that's where कभी भी हम लोग AI के बारे में बात करते हैं तो we need to also think about data. आज के टाइम पे if you talk about Fortune 20 or Fortune 50 companies, बहुत सारी कंपनीज दे हैव देयर मेन फ्रेम सिस्टम, बहुत लेगेसी एप्लीकेशंस होते हैं उनके पास. एंड वो टाइम पे इतना सारा सोचा नहीं था कि एआई आएगा, राइट? सो नाउ एआई इज देयर एंड दे हैव टू इम्प्लीमेंट एआई इन देयर ऑर्गेनाइजेशन. सो टू गेट द डेटा इन शेप so that AI is more fruitful, it's a lot of mess. The data is in silo, data governance, there is GDPR, data security. There are many aspects of data which comes into play, right? So and that is where data engineering is also one of the hot topic in today's time.
और जो हम लोग कवर करेंगे, राइट? सो किसी किसी लोग का एप्टीट्यूड रहता है कि दे लाइक टू, they are a database developer, right? So they should primarily get into data engineering and then move to AI, right? So वो सब types की बातें हम लोग आगे करेंगे, right? This is a quick graph which gives. So usually क्या होता है, this is your data, right? Now the idea over here is that अगर मेरे पास data होता है, right? एक कंपनी के अंदर if I have 10,000 of employees, okay, हर कंपनी के अंदर अलग अलग तरह के लोग होते हैं, लाइक एग्जीक्यूटिव लोग होते हैं, जैसा सीईओ है, या तो सीएमओ है, चीफ ऑफ मार्केटिंग ऑफिसर है, या तो लेट्स से यू हैव अ कॉल सेंटर एजेंट, राइट? अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं वोडाफोन का, इंडिया के अंदर हमारे पास वोडाफोन है, तो वोडाफोन के सीईओ को पता रहना चाहिए कि मेरी कंपनी का डायरेक्शन कैसा है, राइट? सो देयर आर की केपीआईज which he needs to monitor every day in and day out on a weekly basis. So वो सारा डेटा, उसको इंफॉर्मेशन डेटा से मिलेगा. अभी ऑन द अदर साइड अगर आप कॉल करते हो वोडाफोन को, राइट, तो वो कॉल सेंटर एजेंट के पास जाता है. कॉल सेंटर एजेंट के पास भी डेटा आना चाहिए सो दैट ही कैन हेल्प यू सर्व बेटर, राइट? सो एक कंपनी को फंक्शन करने के लिए respective persona in the company should have appropriate data insights, okay, and this is enabled by data analytics and AI, right? So ये जो जर्नी है हम लोग वही बात करेंगे. So देखो ये आपका डेटा है, राइट? आपकी एक कंपनी का डेटा है जिसके अंदर there are different data points, okay, sites visits है, राउंड टेबल मीटिंग है, मीडिया मॉनिटरिंग, whatever it could be, right? So ये आपका डेटा है. अगर डेटा को आपको इंफॉर्मेशन, अभी जब मैंने थोड़ा कलर किया, राइट, सेइंग दैट द सिमिलर आइटम्स और एट्रीब्यूट्स, ओके, इफ आई मेक इट इफ आई उसको अगर मैंने सेम कलर कर दिया तो थोड़ा पैटर्न समझ में आने लगा मुझे कि हाँ इस तरह का पैटर्न है. अगर मैंने उनको ज्वाइन कर दिया, राइट, सो उसमें से मुझे नॉलेज मिलता है. सो द आइडिया इज दैट हाउ डू यू गेट insights or wisdom from the data, right? So data is like a raw data, but to get insights, to get wisdom, to get knowledge, or even to get information, there is something which you need to apply, okay, to get that details, okay? If you have better insights, accurate insights, you can run your company more effectively, right? And that is where data analytics and AI is in very good demand as of date, okay? अभी यहाँ पे I'll just show you one more graph which talks about there are a lot of terms जो हमें सुनने में आते हैं, business analytics, data analytics, forecasting, क्या क्या होता है, right? So ये ग्राफ हमें थोड़ा हेल्प करेगा, right? So अगर आप देखोगे इसमें 3 तरह के बाउंड्रीज बनाते हैं. एक है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, राइट? अगर मुझे देखना है, अगर मैं लेट्स से मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड हूँ, ओके, तो मुझे देखना है कि मेरे प्रीवियस मार्केटिंग ईमेल्स जो मैंने भेजे थे उसमें से कितने लोगों ने खरीदारी की थी. सो अगर मैंने एक मार्केटिंग कैंपेन चलाया था, ओके, अगर मैंने मार्केटिंग कैंपेन चलाया था तो उसमें से कितने लोगों ने एक्चुअली खरीदा था वो ईमेल को देख के, राइट? सो दिस इज प्राइमरली past. I'm trying to understand what happened historically, okay? तो इसके अंदर BI डैशबोर्ड्स वगैरह यूज होते हैं, okay? एक्सेल के रिपोर्ट्स वगैरह यूज होते हैं, ठीक है? तो दिस इज योर पास्ट, प्रेजेंट इज योर करंट, राइट? सो आपको अगर अभी का देखना है कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक कॉल सेंटर के अंदर आप कॉल सेंटर के मैनेजर हैं, ठीक है? आपके पास 50 लोग काम करते हैं. आपको चेक करना है कि मेरे 50 बंदों के पास कितने लोग कॉल पे एंगेज है, कितने लोगों के पास 50 लोगों में से कितने लोग एक्चुअली कस्टमर को कॉल पे हेल्प कर रहे हैं, राइट? सो इट कुड बी 30, इट कुड बी 45, राइट? सो यू कैन अंडरस्टैंड, राइट, ओके, मेरे वर्क फोर्स के साथ क्या हो रहा है. सो दैट इज योर प्रेजेंट व्हिच इज अ रियल टाइम रिपोर्टिंग, राइट? एंड देन देयर इज फ्यूचर. फ्यूचर इज लाइक अगर आपके पास आप एक सेल्स मैनेजर हो, राइट, या सेल्स के हेड हो, राइट, तो आपको चेक करना है कि
गिवन दैट हिस्टोरिकल डेटा आप कितना सेल्स फोरकास्टिंग करोगे, आपका कितना सेल होगा, राइट? सो दैट आपकी व्हाट यू कैन डू इज दैट अगर आप सेल्स फोरकास्टिंग करते हो तो आपको पता रहेगा, अगर आपको अभी क्या जैन है, राइट? अगर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका कोई बिजनेस है और मैं आपको बताता हूँ आपके पास एक मशीन लर्निंग मॉडल या एआई मॉडल है जो आपको बताता है कि अगली एक महीने में विच इज इन फेब आपका सेल्स इतना होगा। सो अगर आपको वो नंबर पता चलता है तो उसके हिसाब से आप आपकी इन्वेंट्री रेडी कर सकते हो, राइट? सो इट हेल्प्स यू इन ऑप्टिमाइजिंग एंड प्लानिंग योर इन्वेंट्री, राइट? सो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं, राइट? आपके फ्रॉड वगैरह के फ्रॉड रिलेटेड अगर कुछ फ्रॉड होता है, राइट, तो आप उसको पहचान भी सकते हो। And then there is machine learning and so uske this is sales forecasting, fraud prevention, and this is the data science, ठीक है? ये data science and this is machine learning. So हम लोग के पास एक आगे slide है where I'll show कि data science, machine learning, deep learning अलग अलग क्यों है, क्या क्या है उसके अंदर, क्या होता है, राइट? बट आपको एक ये आइडिया देना चाहता था कि आप कौन से टाइप का डेटा देखना चाहते हो, राइट? और वो which point in time, right? That is where these are terminologies you'll get used to. Okay. This is a slide which talks about actually अब अगर आप एक बड़े एंटरप्राइज में जब काम करते हो, ओके, तो उसके अंदर एक होता है एक ही फंक्शनैलिटी के अंदर। I'll give you an example. I'll again go back to an example of a Vodafone as a company. अगर वोडाफोन कंपनी के अंदर काम करते हो तो वोडाफोन के पास कितने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है? वोडाफोन के पास उसके बिलिंग सिस्टम कितने होते हैं, राइट? उसके नेटवर्क सिस्टम्स कितने होते हैं, उसके प्रोविजनिंग सिस्टम्स कितने होते हैं, राइट? उसके क्लिक स्ट्रीम, उसका वेबसाइट मेंटेनेंस। सो द प्रॉब्लम इज दैट देयर आर टू मेनी एप्लीकेशंस टू रन एन एंटरप्राइज। अब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, राइट? अभी हर सॉफ्टवेयर अपना खुद का डेटा जनरेट करता है। अगर आपको, जैसा हम लोग ने पहले देखा, राइट, कि अगर मुझे ये डेटा आता है, डेटा से अगर इनसाइट और विजडम या नॉलेज बनाना है, राइट, तो आई हैव टू गेट दैट डेटा इनटू वन प्लेस एंड देन आई हैव टू कनेक्ट दैट डेटा एंड मेक सेंस आउट ऑफ दैट डेटा, राइट? सो जब आप यूजुअली देखते हो तो बड़े एंटरप्राइज में तो इट इज ऑल मेस, data is all mess, and to clean that mess you need to have some skills, right? And these are the skills which we are going to talk about today. All right. And second most important thing is that कि data की एक value रहती है, right? So this is very interesting graph. Okay, this is y-axis is value and this is x-axis is time. Okay, तो अगर आपका अभी आप let's say एक business event generate हुआ, okay? So I'll give you an example कि अगर इसमें ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं, आप वेबसाइट पे जाते हैं और आप चैट करते हैं किसी कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से, राइट? लेट्स से आप amazon.com पे गए या तो flipkart.com पे गए और वहां पे आपने चैट किया, ठीक है? आपने पहले क्या किया, आपने पहले वेबसाइट पे गए flipkart.com पे, आपने कुछ सर्च किया, ठीक है? लेट्स से आपने कुछ स्पोर्ट्स का सामान आपको चाहिए था तो आप वो कैटेगरी में गए, आप देखना चालू किए, राइट? एंड यू वर नॉट एबल टू फाइंड दैट। अगर मैंने ये जो एंड देन व्हाट यू डिड इज दैट आपको वो स्पोर्ट्स का सामान खरीदना था, आइडेंटिफाई करना, खरीदना था flipkart.com पे, एंड व्हेन यू स्टार्ट एंड देन आपको नहीं मिला, राइट? सो यू वेंट ऑन टू दैट चैट फंक्शनैलिटी and you started talking to that chat agent. आप चैट पे बात कर रहे हो कि अब तो पहले आप जब चैट स्टार्ट करते हो तो आपका आइडेंटिफिकेशन होता है, आपका वेरिफिकेशन होता है कि आपका यूजर नेम जो भी है, राइट, आईडी वगैरह आपको उसको देना पड़ता है सो दैट दे ऑथेंटिकेट द यूजर, राइट? अब जब आप ये आपने एक ट्रांजैक्शन किया कि आपने flipkart.com पे जाके आपने एक प्रोडक्ट सर्च किया था, आपको वो प्रोडक्ट नहीं मिला था, ठीक है?
और दूसरा ट्रांजैक्शन आपने वही वेबसाइट पे चालू किया जो कि एक चैट एजेंट से आप बात करते हो। आप जब चैट पे बात करते हो तो आप ये नहीं चाहोगे कि आप पूरा जो आपने पहले ट्रांजैक्शन किया था कि मैं आपके वेबसाइट पे लॉगिन किया था और ये प्रोडक्ट देखा, ये देखा, राइट, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक था, राइट। तो अगर ये flipkart.com के पास ऑलरेडी डेटा है, अगर flipkart.com ऐसा फंक्शनैलिटी बनाती है कि हाँ, अगर कभी भी एनी टाइम व्हेन एनी कस्टमर चैट्स विद एन एजेंट, उसका जो प्रीवियस ट्रांजैक्शंस है, राइट, उसका समरी इफ आई गिव टू द एजेंट, तो उसके लिए कितना रहेगा कि आप ये प्रोडक्ट के लिए आप वहां पे गए थे और आपको नहीं मिला, तो मैं आपके लिए जो भी सजेशंस है, रिकमेंडेशंस है, मैं कर लूंगा, राइट। सो द आइडिया इज दैट जब भी आपका बिजनेस इवेंट, बिजनेस इवेंट अपने केस के अंदर क्या हुआ कि यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ प्रोडक्ट एंड यू कुड नॉट फाइंड अ प्रोडक्ट, राइट, सो दैट्स अ बिजनेस इवेंट, राइट। सो द बिजनेस इवेंट जैसे जनरेट होता है, राइट, सो दिस इज ऑन द टाइम स्केल, राइट। आपका बिजनेस इवेंट start, आपका business event generate हुआ at time is equal to t0, which is 0 seconds or 1 second or whatever, right, it holds the maximum value. अगर आपने business event generate हुआ और आपने तभी act किया तो आपको बहुत फायदा होगा। अगर आपने उसने business event generate हुआ फिर आपने बहुत बाद 2-3 या 4 दिन के बाद आपने उस पर एक्शन लिया, तो ऐसा भी हो सकता है कि Moeen, whatever the customer who went for that product search on Flipkart, उसने Snapdeal पे जाके या तो Amazon पे जाके उसने खरीद लिया, so that is a lost sales opportunity, right? So the idea is that whenever a business event is generated, it has the maximum value when it got generated, and then from there onwards it gives you a diminishing return, right? So यही बोलते हैं कि टाइम इज मनी, यू नीड टू एक्ट फास्ट व्हेन द डेटा पॉइंट्स आर जनरेटेड, ओके। एंड और ये सब करने के लिए, राइट, कि अगर आपने एक ही स्क्रीन के अंदर यहाँ पे आपने ट्रांजैक्शन किया, आपके चैट, बिकॉज देखो वेबसाइट का सॉफ्टवेयर अलग होता है, चैट का सॉफ्टवेयर अलग होता है। अभी वेबसाइट का डेटा चैट वाले के पास, एजेंट के पास जाएगा, वो दैट इज समथिंग व्हाट डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा गाइज दे डू। I'll cover this slide and then take some pause कि अगर किसी को कुछ क्वेश्चन। सो आज की डेट के अंदर अगर आपके पास ये तीन स्किल्स है, राइट, आई मीन दिस इज अ किलर कॉम्बिनेशन, राइट। आपको डेटा भी आता है, आपको क्लाउड भी आता है, आपको इंटेलिजेंस विच इज एआई भी आता है, राइट। दिस इज अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन, राइट, और लोग ऐसे बहुत ही कम मिलते हैं, ओके। So the idea is that हम लोग बात करेंगे आज, हम लोग डेटा एंड एआई के बारे में ज्यादा बात करेंगे, क्लाउड का बहुत थोड़ा सा हिस्सा which is related to data and AI उसके बारे में बात करेंगे, right? But just to give a perspective, if you have these three skills, right, in any form, any fashion, I mean, it's a killer combination. Okay, before I deep dive, I'll just look at the chat. See कुछ questions है. Okay, I believe we are still good. तो अगर किसी को कुछ questions रहेंगे तो please put it up in a chat window. After every couple of slides, I'll look at a chat window, take a pause, and then we'll proceed further. ठीक है? अभी तक कुछ questions, please feel free to put in the chat window. Okay. Now अभी हम लोग ये बात करते हैं when we talk about data, right? डेटा के अंदर भी काफी सारे डिफरेंट रोल्स होते हैं, राइट। सो ये स्लाइड हम लोग को ये बताती हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ डेटा स्टोरेज इन एन एंटरप्राइज, ओके। सो पहले अपने पास बहुत पुराने जमाने में वी यूज्ड टू डू इट इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फिर उसके बाद यू हैव RDBMS, ओके, व्हिच इज Oracle and MySQL of the world, okay. I'll basically club this one into a database section, right? And this is your data warehouse, which is Teradata, Netezza, and IBM DB2, right? And then you have Hadoop, which is big data component,
Okay, now we've got cloud data warehouse. So this is on the side that abhi recently it's all cloud data warehouse, right? So most of the workload जो आपके Hadoop वगैरह पे है, right, वो सब अभी migration हो रहे हैं on to cloud, ठीक है? So अगर आप Oracle database developer है या तो फिर Teradata developer है, right? तो आपको next steps आपके क्या होना चाहिए? We'll cover that into the next slide. But this is basically for somebody who's like into graduation या 12th standard वगैरह में है, तो उनको बताने के लिए कि when we say data storage या database developer या data warehouse, उसके अंदर क्या क्या technologies connected है, right? Okay. This is इसमें हम लोग ने what ये slide के अंदर what we have done is that we have elaborated on के कितने अलग-अलग type के databases होते हैं. Okay. So there is a website, I don't remember that name of the website, but on an enterprise recognized level, there are around 300 databases. Okay, there is I don't have that link, but there is a ranking which there is a global ranking of databases, right? के आज के डेट में टॉप नंबर 1 कौन सा डेटाबेस है, राइट? और डेटाबेस के अंदर भी देयर आर मल्टीपल सब कैटेगरीज, ठीक है? नाउ सब कैटेगरीज एज एन रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है? आपके नो सीक्वल डेटाबेसेस होते हैं, नो सीक्वल के अंदर भी आपके डॉक्यूमेंट डेटाबेस होते हैं, की वैल्यू डेटाबेस होते हैं, ग्राफ डीबी होते हैं, राइट? टाइम सीरीज डेटाबेस होते हैं, ठीक है? एंड देन देयर आर इन मेमोरी डेटाबेसेस, राइट? So इनके these are all, they all store data, no doubt about it, right? But इनके जो एप्लीकेशन के अंदर जो इनके स्ट्रेंथ्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं. आप इन मेमोरी डेटाबेस आप एक OLTP की जगह पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है? वैसे फिर देन ग्राफ डेटाबेस, अगर आप ग्राफ डेटाबेस आपको कौन से आप यूज केस के लिए करना आप यूज करना चाहिए, इट हैज अ डिफरेंट पर्पस ऑल टुगेदर, राइट? So there is the idea is कि अगर आपने Oracle, so ज्यादा करके लोग SQL पे काम करते हैं, MySQL पे, ठीक है, Oracle database पे वगैरह पे काम करते हैं, okay? But if they would want to get into something different, they should go for NoSQL database. NoSQL database आपका MongoDB भी काफी popular है from an enterprise perspective. Then GraphDB, which is Neo4j. Neo4j gives you a capability from it has AI capabilities और उसके अंदर खुद है present है. So you just have to run those functions and it will give you AI algorithms on top of the data on Neo4j itself. ठीक है? And then there is time series database. टाइम सीरीज डेटाबेस क्यों यूज होता है? आपको अगर हर 5 सेकेंड में अगर आपको डेटा रिफ्रेश चाहिए, राइट? जैसे कि लेट्स से आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो विच इज अ फ्रॉड मॉनिटरिंग एप्लीकेशन. फ्रॉड मॉनिटरिंग आपको आप जब जो भी ट्रैफिक, वेब ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे आता है, राइट, आपको चेक करना रहेगा कि इसने you need to capture the data on a real time and then show that data output. आपको देखना रहेगा कि कौन से आईपी से कितना हिट कितना आया, राइट? सो ये रियल टाइम डेटा होता है, राइट? सो उसके लिए अगर करना पड़ता है, राइट? तो यहाँ पे इनफ्लक्स डेटा है एंड देयर आर कपल ऑफ अदर डेटाबेसेस एज वेल. ओके, मूव ऑन टू द this is an end-to-end functional architecture wherein there are different components of data. ठीक है? अब on the left hand side ये आपके data sources है, right? जैसा कि आपके databases है, आपके billing transaction वगैरह जो होते हैं, right? This is your OLTP databases which will store your data. Then you have your website related data, then third party data, right? अगर आपको ये डेटा, अगर सारा डेटा एक साथ लेके आके you need to make sense out of the data, you perform ETL. Okay, so ETL enterprise के अंदर there are ETL tools as well. I'll talk about what are the ETL tools, right? And there are specific opportunities or roles under this area as well. Okay, ETL. And then once you do ETL क्या होता है? Extract, transform and load. यानी ये सारे डेटाबेसेस या एप्लीकेशन में से आप डेटा सब निकाल के एक जगह डेटा जमा करते हो. ओके, दैट इज द वेरी नाइव एक्सप्लेनेशन ऑफ
what ETL does, but it does a lot of thing under the hood. जब ये आप ETL करते हो तो आपके पास आता है डेटा वेयरहाउस. डेटा वेयरहाउस से पहले भी आता है डेटा लेक. ओके, सो क्या होता है डेटा लेक? सो आपका डेटा डेटा लेक में आता है. ओके, डेटा लेक में आपका अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड डेटा दोनों रहता है, राइट? जैसा कि आपके वीडियो फाइल्स हैं या इमेजेस वगैरह है, राइट? These are like unstructured data, so all that data can reside into data lake. ओके, डेटा लेक में आने के बाद उसके बाद आप डेटा वेयरहाउस बना सकते हो. डेटा वेयरहाउस में थोड़ा स्ट्रक्चर्ड डेटा रहता है. सो इफ यू सी, आपने यहाँ पे देखा रहेगा कि ये आपका सब स्ट्रक्चर्ड डेटा सोर्सेज है. तो सारे स्ट्रक्चर्ड डेटा सोर्सेज डेटा वेयरहाउस में जाते हैं, एंड देन इफ यू हैव अ लॉग फाइल्स एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, दे गो टू डेटा लेक. तो आपके डेटा लेक में आता है, राइट? एंड देन you create BRD data. BRD is like business ready data using your data marts. ओके, और फिर आप आपके डिफरेंट पर्सोनास, अगर फाइनेंस वाले को रिपोर्ट चाहिए, मार्केटिंग वाले को रिपोर्ट चाहिए, तो आप ऐसा बनाते हो. तो एंटरप्राइज में इस तरीका का आर्किटेक्चर होता है. ओके, और ये सब बनाने के लिए आपको लोग लगते हैं, राइट? तो वो सारे रोल्स हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. ओके, सो दिस इज, आई जस्ट टेक अ पॉज. ओके, इज इट ब्रेकिंग अगेन or is it like sometimes only? Anyways, if it's more than, it's going good. Moeen. All right, okay. If it's more than 10 seconds, please let me know. Somebody can chime in and let me know about it. Okay, this is very important slide. I will spend a lot of time explaining क्या ये है क्या नहीं है, right? So the idea here is that जो हम लोग ने बात किया previous slides में, right? The opportunity space which we talked about. एंड उसके बाद वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि अगर एंटरप्राइज में अगर आपको डेटा और एनालिटिक्स करना है तो आपको कैसा दिखता है, आई मीन व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शनल कंपोनेंट्स अबाउट इट, राइट? एंड दीज आर लाइक अगर आपको अगर लेट्स से अगर आप मैनेजर हो, राइट? अगर कंपनी के अंदर मैनेजर हो, अगर आपको किसी ने बोला कि ये काम आपको करना है, राइट? यू हैव टू डू, यू आर अ टेक्निकल डिलीवरी मैनेजर, तो आपको हायर करना है लोग, राइट? तो आपको हायर करने के लिए आपको पता रहना चाहिए कि कौन से लोग, कैसे किस तरह के लोग लगते हैं, राइट? अगर आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हो, राइट, तो आपको पता रहना चाहिए कि दो जॉब में या दो रोल्स में क्या डिफरेंस है, राइट? एंड आई हैव एंश्योर्ड दैट मैंने एकदम डिटेल लेवल का रोल्स आइडेंटिफाई किया है. ओके, एंड these are like very basic skills which that role should have. Okay, there could be an overlapping skill, that is not a problem. ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं. पहला रोल which is a data analyst. Data analyst क्या करता है, मैं आपको समझा सकता हूँ. ठीक है, डेटा अभी आपका एक आपका बिजनेस, राइट? आप लेट्स से IT डिपार्टमेंट में काम करते हो. ठीक है, एक बड़ी कंपनी के अंदर IT डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हो. IT डिपार्टमेंट के अंदर एक मैनेजर होता है, राइट? वो मैनेजर के पास उसका एक बिजनेस वाला आता है जो कि सेल्स वाला रहेगा या तो मार्केटिंग वाला रहेगा. वो आके बोलेगा कि मुझे ये फंक्शनैलिटी बनानी है, राइट? अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो कि फंक्शनैलिटी पे हम लोग काम कर रहे हैं, राइट? उसके अंदर कैसा है कि अगर आपकी वोडाफोन स्टोर के अंदर आप जाते हो, राइट? तो आप जब वोडाफोन स्टोर के अंदर जाते हो तो आप एक देयर इज अ कायोस्क, राइट? एंड यू हैव टू टेक अ टोकन. ठीक है, so that's a token which is taken in from a kiosk, and then your आपका नंबर बुलाते हैं and then you go to the respective agent which is there in the store. Instead of doing that, आप क्या कर सकते हो, there is something known as digital check-in, right? Digital check-in के अंदर क्या होता है कि आपके पास वोडाफोन का ऐप रहेगा, आप बताओ, ड्रॉप डाउन में you make an appointment and you get a token number, right? And once you arrive at that particular store, it will count you in the queue, right? So and that has helped a lot, right? In these COVID times, that is a new feature. तो ऐसा अगर कोई बनाना चाहता है तो वो आपके पास आएगा, आप IT वाले हो, राइट? आपके मैनेजर के पास आएगा और आपको फंक्शनैलिटी देगा कि ऐसा कुछ बनाना है. So as a data analyst, आप क्या, आपका काम, आपका मैनेजर आपके पास आएगा, बोलेगा इनको ये बनाना है, आप चेक करो कि ये कैसे फीजिबल है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप मल्टीपल जो डेटा सोर्सेज एप्लीकेशन है उसका डेटा देखोगे, राइट? डेटा मैपिंग डॉक्यूमेंट बनाओगे आप, एग्जिस्टिंग डेटाबेस का डेटा समझोगे, गैप एनालिसिस करोगे, राइट? सो दैट इज ऑल व्हाट अ डेटा एनालिस्ट डज.
Okay, he will analyze the as is state or to be state of a application, right? So इसके अंदर आपको SQL is like आपको आना ही आना चाहिए. Okay, and अगर आपको you know, if you know any programming language, you know, that is good to have, right? So that is the role of a data analyst. Okay, then we'll talk about backend developer or a database developer. अभी backend developer, database developer क्या होता है? It's like, you know, there are UI say, right? If you have a application which you are building in, right? So जो भी आप transaction store करते हो, right? Which is like CRUD transactions. So वो सारे transaction आपको store करना रहेगा एक database के अंदर, right? And then there are a lot of procedures, triggers, views, and blah blah, all that functionality which you build. So वो सारा एक backend engineer या you know database developer करता है, right? आज की तारीख में you know, if you are familiar with usually it's Oracle, which has been, Oracle is like you know, predominant in the industry. But अगर आज के date में if somebody is picking up a new skill, I would rather suggest that, you know, pick up Postgres, right? अगर आपको Postgres आता है, Postgres is an open source and it is you know, heavily sought after for most of the customers. And this is similar to MySQL and all that, right? So अगर आपको MySQL वगैरह आता है, अगर आपको job switch करना है, if you just learn Postgres, it's not very difficult, right? It is just another flavor of RDBMS. Okay, अगर आपने Postgres कर लिया, it will enhance the value into your resume. Okay, and then I would suggest एक document DB, which is MongoDB, right? अगर MongoDB भी कर लिया, because MongoDB is little different than a normal RDBMS. Okay, तो आप वो अगर दोनों कर लोगे, this I mean, it helps a lot. Okay, and when I say backend developer, there are certain backend developers. वो लोग क्या करते हैं? They create microservices from your database level to your front end level. Okay, तो उसके अंदर कभी-कभी आपको you know, microservices बनाने के लिए Spring Boot या तो Python जैसी languages भी use करते हैं, right? But that is like an extreme level of backend developer. Okay. Then we'll talk about a data warehouse developer. Okay, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, right? ये data warehouse बनाने के लिए, right? So इसके लिए भी एक role होता है specifically. So अगर data warehouse developer बनना चाहते हो, तो data warehouse के अंदर आप क्या करते हो? अलग-अलग जगह से data लाके एक ही जगह पे data इकट्ठा करते हो, right? So आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से सारे data sources से आप data लेके आके एक data warehouse के अंदर लाते हो, right? So अभी जब data warehouse के अंदर लाते हो, तो आप बहुत सारे applications आपका data consume करके report बनाएंगे. So it has its own distinct features और characteristic. ठीक है, आपका जो data warehouse के अंदर रहेगा, उसकी data quality and इसका you know, data integrity, it should be you know, it should be maintained. अगर नहीं है, then your data is broken, right? And people would not rely on your data warehouse, right? अगर आप data warehouse developer रह चुके हैं, right? तो there are multiple generations, right? Like, you know, first generation data warehouse, right? And second generation, and now is the third generation, right? So first generation data warehouse जैसा Teradata है, Netezza है, right? So ये first generation बोलते हैं. अगर आप second generation के अंदर, अगर Hadoop वगैरह के अंदर, अगर Hive वगैरह के अंदर data warehouse अगर आपने बनाया, right? But right now, if you are trying to get into, you know, data warehouse developer, you should look at something known as Snowflake, right? It is very hot in the market, and it is like a cloud data warehouse. ये मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पे आता है, right? So this is where the cloud data warehouse is, right? So ये आपका Snowflake है. Amazon Redshift भी है, Google BigQuery भी है, Azure का भी you know, data warehouse. So आप उसमें से कोई भी एक, based on आप कौन से आपका कस्टमर कौन सा क्लाउड प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, you can learn that data warehouse. This not, और वो difficult नहीं है, right? Snowflake and BigQuery is not difficult. अगर आपने कोई database वगैरह सीखा हुआ है, like Oracle and all that, it is very similar, but थोड़ा advanced रहता है, right? Okay. Now then we'll talk about BI developer. BI developer का काम क्या होता है मैं बताता हूँ, right? ये BI and analytics. अभी ये जो डैशबोर्ड रिपोर्ट्स जो हम लोग बनाते हैं, right? I don't have a sample, वरना मैं आपको बता सकता कि जो KPI है, जो insights है, right? वो सब बताने के लिए आपको डैशबोर्ड्स वगैरह बनाना पड़ता है, right? And that is
when your BI developer comes in. अगर आप BI developer में कुछ करना चाहते हो, right? I would strongly recommend you pick up a Power BI or Looker, right? Because Looker is on the cloud. ठीक है, तो ये दो skills, इसमें और भी flavors आते हैं, Tableau आता है, MicroStrategy आता है, and there are a couple of other as well. SSMS भी है, right? But currently, and what I've seen in the market is that Power BI and Looker are like, you know, most sought after. ठीक है. उसके बाद we'll talk about ETL developer. तो ETL developer क्या करता है, जैसे हम लोगों ने बताया, right? ETL developer will build data flows and data pipeline to get the data from different data sources, okay? And then लाके फिर वो data warehouse में dump करता है, right? So this is the responsibility of ETL developer. ठीक है. So ETL developer के अंदर you have usually you have enterprise tools. Okay, यहाँ पे मैं Informatica I've mentioned, but there are talent भी है, Alteryx भी है, right? But this is like you know, choice of the organization what they do. ठीक है. And then we talk about big data engineer. Big data engineer is where your Hadoop, right? If ये वाला है, right? Let me show you. So this is second generation data warehouse functionality, right? अगर आप big data engineer हो, so big data engineer they usually work on the Hadoop technologies, right? So यहाँ पे मैंने कुछ Hadoop technologies बताई है, which is Spark, NiFi, and Kafka, right? But what we have seen is that most of the enterprises they are moving away from Hadoop based ecosystem, right? They are adopting cloud ecosystem now. Okay, so I would still not recommend, but it is highly suggested that you do know what is Spark, what is NiFi, what is Kafka, right? And what are the basic, you know, architecture and what are the primary features कि इनका काम क्या है when you talk about building a data pipeline in the big data world. ठीक है. Then we talk about cloud data engineer, right? Cloud data engineer क्या करता है, मैं यहाँ पे बताता हूँ, right? So ये जो हम लोग ने अभी जितना भी ये सब बात किया, right? ETL है, data warehouse है, data lake है, data marts है, BI है, right? This earlier, you know, it was second generation was always on prem, right? अगर आपको cloud पे बनाना है, तो that is nothing but cloud data engineer. तो अगर let's say आपके company में AWS cloud use होता है, right? So data engineer will use, you know, some of the services like S3, Redshift, Glue, and Athena. Okay, so these are some services you need to know. And जो भी है, right? अगर आप Google वगैरह use करते हो या Microsoft वगैरह use करते हो, so there are different services which they use, right? And these services are like very similar to one another, right? आपको खाली इतना पता रहना चाहिए कि कौन, and every cloud provider has its own certification under data engineer, right? So अगर आप data engineer का certification देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी services है, ठीक है? And one of the most interesting and less talked about in the industry is data modeler and the data steward, right? So एक data governance करके एक field होती है, right? In data ecosystem, right? So data modeler and data steward falls into that criteria. Now, what does data governance do, right? So data governance की team क्या करती है? They ensure that आपका जो data का quality है, right? Data security है, right? Metadata है, lineage है. There are a lot of other terminologies जो के use होती है at an enterprise level, right? So data modeler will basically use tools like Irwin, okay, and they will create logical, physical data models, right? They will try to create you know, automation between physical and logical data models. So ये Irwin करके एक tool होता है जिसमें वो लोग data modeler काम करते हैं, okay. Then you have data steward. Data steward again, जैसा कि मैं बताया कि आपको आप because सबको अभी let's say, you know, एक marketing का बंदा है, marketing के बंदे को पता नहीं है कि क्या-क्या डेटा यहाँ पे है, डेटा वेयरहाउस के अंदर है, तो उसको ज्यादा जानकारी देने के लिए हम लोग ऐसे टूल्स यूज करते हैं, कोलिब्रा वगैरह, राइट? कोलिब्रा और मेंटा, जिसको बोलो, सो वो टूल्स क्या करते हैं, दे गिव यू मेटा डेटा अबाउट द डेटा. मेटा डेटा इज लाइक
giving more detail about the data, that is metadata. And lineage is basically talking about if I am building a KPI in a marketing report, तो वो KPI का कौन से data source से आया, so it is tracing that information, right? So that is why it's a very interesting field, very highly sought after, but ये area में बहुत कम लोग जाते हैं, okay? जो लोग ने काम किया है वो लोग ही रहते हैं. I've not heard that anybody who's graduated and he wants to get into a data steward kind of a role, okay? And then you have an architect, right? MDM architect or data architect, okay? So these are different roles which are available in data. All of these roles are highly sought after, okay, in the market. And अगर आपको certification करना है, right? So what are the good certifications that are available currently in market? Certification ऐसा नहीं है कि आपने certification कर दिया, कल आपको job मिल जाएगी. It's not like that. It is just to establish on your resume कि you are certified and you know the concepts very well. Okay, that is the purpose of doing certification according to me, right? अगर आप certification इसके लिए करते हो कि आपको job दूसरे दिन मिल जाए, it does not prove that. ठीक है? तो इसके अंदर there are some certifications which you should look after, which is like Snowflake की certifications है, right? Then there is something known as Databricks. हर organization की जैसे Snowflake के अंदर there are different modules, right? So आप architect level पे है, developer level पे है, database level पे है, right? So you have to choose appropriate certification track and give these certifications, okay? But these are like really hot in the market. So Snowflake certification hai, then there is something known as Databricks, okay? Databricks करके एक company है. It does a lot of Spark related notebook running onto the cloud, okay? So उसके भी modules है. It also has data science related workbench and all, right? So आप check कर सकते हो Databricks के लिए. Then there is something known as Azure data engineer. So data engineering and cloud, basically cloud data engineer जो लिखा है हम लोग ने, it is हर cloud वाला cloud service provider will have a data engineering track, and this would be I would highly recommend, right? If somebody is getting into cloud data engineer, do give this certification. It really helps, okay? And then we talk about BI developer, right? So if you're doing Power BI, you should opt for Power BI or Tableau or related this thing. Agar aap, let's say if you're using Salesforce, okay, CRM application, Salesforce also does some out of the box analytics. You get like Einstein analytics and discovery, right? So uska bhi khud ka ek certification hota hai. Okay. Any question? I'll just look at. Does Power BI also fit into data warehouse developer? Yeah, I think you got your answer. So Power BI, so these are like BI developers. So data warehouses. BI developers will connect to data warehouse. Okay. So जैसा मैंने बताया था, right? There is an overlapping, right, between all these roles. There is an overlap, right? अगर आप डेटा वेयरहाउस डेवलपर का रिज्यूमे देखोगे एंड बीआई डेवलपर का रिज्यूमे देखोगे, BI developer should know SQL and he will primarily spend around 70 to 80% time on the visualization aspect. Is a Power BI Tableau वगैरह पे, right? But data warehouse guy will just work on the data warehouse. Where's all of that? Okay. So there are some overlapping areas, but you need to know कि कौन सा role अगर एक resume आप देख रहे हो, right? You should be able to clearly identify that what is that person clearly working on. Okay, I'll take a pause of like 10 seconds before moving ahead, because next is like all AI and data science. All right, I'll take that as no. So हम लोग जब डेटा ये सब डेटा के बारे में बात किया, right? So it is really important जब आप AI या machine learning या data science कर रहे हो, your data should be very nice. Okay, अभी मैं बताता हूँ कि data science ये है. So ये आपने बहुत सारी जगह से डेटा ETL करके डेटा वेयरहाउस में लाके डेटा मार्ट पे लाके BI वगैरह कर लिया, right?
and then there is one more component known as data science. So data science can connect to data lake or data warehouse or data mart. Okay, so आपका data एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, right? When I say साफ सुथरा, from a data quality perspective, integrity perspective, right, governance perspective, it should be very well defined. Okay, usually अभी क्या होता है ना market enterprise में, and these are the real business problems or the problem statements talk to us from the customer side. वो लोग क्या बोलते हैं कि आप डेटा साइंस के बंदे को हायर करते हो, राइट? आपने 20-25 लाख रुपए देके आपने डेटा साइंस के बंदे को हायर किया, राइट? अभी डेटा साइंस वाले बंदे का काम क्या है कि आपका मशीन लर्निंग मॉडल्स वगैरह बनाएगा, राइट, एल्गोरिथम्स वगैरह पे काम करेगा। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग इज दैट these data science guys, they are trying to understand the data, right? अगर उसको डेटा साइंस के बंदे को डेटा समझ में नहीं आएगा तो मशीन लर्निंग मॉडल्स एल्गोरिथम्स वगैरह नहीं कर पाएगा, राइट? One of this customer told us that around 60% of his data science team is spending efforts on understanding the data. अगर ये क्यों होता है? Because the data is not in a good shape, right? It is not in a defined quality or the manner in which it should be. And I'm talking about a very big organization, okay? और ये जितनी आप बड़ी organization में होंगे, solving the data problem is a really hard problem. It's not an easy problem. Okay, so अभी आपको ये पता चलेगा कि data science and AI/ML कहाँ पे बैठता है in the data ecosystem, right? So that's where I talked about data and analytics first, and then about data science. ठीक है? So अभी आपको data science, machine learning, AI, there are a lot of terminologies, right? So मैं कुछ I'll just walk you through a couple of graphics or diagrams, and I'll give you an idea that what does data science scope is all about. Okay, so that it's easy for you to understand. Okay, so अगर आपको आप देखोगे there are 3 pillars. एक math and statistics का है, एक domain knowledge है या तो business knowledge है, and एक तो computer science और IT वाला pillar है, right? So there are 3 pillars: math, computer science and domain knowledge. So when I say domain knowledge, यानी क्या? Let's say marketing domain हो गया, right? Sales domain हो गया, right? Then you have operations domain, right? So there are different domains. तो जब ये तीनों चीजों को अगर आप मिलाते हो तो it is a data science, right? अगर ये तीन चीज नहीं होती है, अगर let's say math और computer science हुआ, right? It is machine learning, right? Math and knowledge ये हुआ तो it is applied research. If it's computer science and domain, it's ad hoc technique. So अगर ये तीनों चीज आती है, then it is a data science. Data scientist बोलते हैं इसको, okay, वो person को who has all 3 facets. Okay, now अभी मैं ये अभी AI बता रहा हूँ, right? So अभी AI कैसे दिखता है? Okay, so AI is a very large is an umbrella term. Okay, AI के अंदर you have smaller subdivisions or sub modules. ठीक है, AI के अंदर एक machine learning होता है, machine learning के अंदर एक deep learning करके होता है, right? So this is deep learning, this is machine learning, and this is AI. So AI is a very broader term which has multiple sub modules. ठीक है, वैसे ही NLP, right? NLP and NLU, natural language understanding, right? उसके अंदर भी machine translation, text generation, question answering, context extraction, it all falls under natural language processing, right? Natural language processing क्या होता है? आपका जो अभी देखो chat data है, आप जब एक chat agent से जो type करते हो ना, जो generate होता है जो text, right? That is known as taxonomy, okay? And that taxonomy पे जो intelligence आपको लाना है, right? कि ये बंदे ने क्या बात किया agent से, right? You don't want to read through that text, okay? जो एक 3-4 let's say 10 sentences का कुछ जो भी conversation हुआ रहेगा, you don't want to go through all that. आपको summary चाहिए, right? आपको check करना है कि ये बंदे ने क्या product के बारे में बात किया था, कि उसके order के बारे में बात किया था, कि उसके refund के बारे में बात किया था. You just want to know that summary, right? So you use NLP to do that. Okay.
And then you have speech recognition, जो अपना Siri और Alexa वगैरह है, right? Text to speech and speech to text, right? So it always understands and then responds to you, right? So that is speech recognition. Then there is something known as vision, computer vision, right? Which we'll talk about, which is primarily around image recognition and machine vision, right? And then there is planning के अंदर operations भी होता है, mathematical optimization is one of the areas in the AI which is under planning, and then there is robotics. Robotics I'm not going to talk about. Robotics and export systems. Okay. Now हम लोग ये समझते हैं कि अगर आप मशीन लर्निंग और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, राइट, इस इन दोनों चीजों में what is different. Okay, this is very important to understand because हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर समझ लेते हैं, राइट, जल्दी से, because we've been experiencing that. So if I have if I give you a context के हाँ देखो सॉफ्टवेयर डेवलपर ऐसा काम करते हैं, अगर आपको मशीन लर्निंग समझना है from a lens of a software developer, it gets easier for you to understand that what does machine learning does. तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है कि एक डेवलपर रहता है, हु इज अ ह्यूमन प्रोग्रामर, राइट? वो क्या करता है, इफ एल्स स्टेटमेंट लिखता है, हार्ड कोडेड इंस्ट्रक्शंस लिखता है कि इफ माय डेटा इज लाइक दिस, डू लाइक दिस, एल्स डू, सो इट इज द हार्ड कोडेड इंस्ट्रक्शंस, ओके? एंड इस वो हार्ड कोडेड इंस्ट्रक्शंस पे आपको फ्रंट एंड से इनपुट आता है, राइट? सो अगर आपको एक फॉर्म फिल करना रहता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड ब्ला 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 ऑल दैट, राइट? Or and then you say submit, right? So that is an input, okay? So on the hard coded instructions which is written by human programmer, you provide an input, that code it executes and it gives you an output. ठीक है, मैंने वो फॉर्म फिल किया, मोइन सुनेसरा, ईमेल एड्रेस, लोकेशन, ऑल दैट, मैंने फोन नंबर 10 नंबर की जगह पे 9 नंबर किया, राइट? सो देयर विल बी एन एरर व्हिच विल बी थ्रोन आउट, राइट? So that's an output. A program executes and it gives you an output, right? The output could be like success or it could be a failure. Okay, so this is the normal realm of the programming world. Now what changes in machine learning aspect? ठीक है, तो इसमें क्या मशीन और सबके अंदर देखो इसके अंदर प्रोग्राम रहता है, राइट? ये हार्ड कोडेड इंस्ट्रक्शन इज योर कोड, ठीक है? दिस इनपुट इज योर डेटा, ठीक है? सो यू हैव कोड एंड यू हैव डेटा एंड यू आर जनरेटिंग एन आउटपुट, ओके? यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका डेटा है, you take historical data, okay, and you identify a problem कि आपको सेल्स फोरकास्टिंग करना है, ठीक है? सो क्या मशीन लर्निंग क्या करता है, इट learns from your historical sample data, it finds a pattern, okay, checks the input for the pattern. So अगर आप let's say मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फ्रॉड, ठीक है? फ्रॉड can be solved using machine learning problem, ठीक है? So आप क्या करोगे कि आप जितने भी आपकी कंपनी में प्रीवियस 5 साल में जो भी फ्रॉड हुए थे वो सारा डेटा आप स्टडी करोगे, ओके? You will try and identify a pattern. So finds a pattern is the functionality which is done by an algorithm, okay? So आपके पास एक algorithm रहेगा, वो algorithm को आप data दोगे, which is the historical data, okay? That data and फिर क्या होगा उसमें, you will try to give a new data point, okay? जो कि आपको पता नहीं है कि फ्रॉड है कि नहीं, ठीक है? आप जब उसका वो इनपुट दोगे तो वो आपको बताएगा कि ये ट्रांजैक्शन फ्रॉड है कि नहीं है, ओके? अगर जो भी आउटपुट होता है वो आउटपुट, दिस इज नोन एज फीडबैक लूप, which is used for machines or programs to learn, and that is what is known as learning, right? So machine learning is basically algorithm trying to identify a pattern on a historical data, and periodically they keep updating the patterns through a feedback loop, okay? अभी एक और टर्म है, राइट? सो यहाँ पे हम लोग ने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग के बारे में बात की है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, राइट? So this is little advanced, but I'll just explain, ठीक है? So that जब हम लोग roles पे जाएंगे, right? So you need to understand what a deep learning engineer does versus what a machine learning engineer does, right? अभी machine learning problems में क्या होता है कि let's say this is an example, right?
This example is that आपको, if I give you an image of a car, ठीक है, ये गाड़ी का फोटो है, right, which is as an input. अगर मैं आपको बोलूंगा कि you know can you write a logic, ठीक है, through a program saying that if an image of a car is given to you, how will you identify this, that this is, it is a car or not, right? So there is something known as feature extraction which needs to be done by a machine learning engineer. So वो बताएगा कि, you know, if there are two round objects, right, and then there is some shape like this, right, if there is a bonnet, if there are two windows, right, so these are known as features. अगर एक इमेज के अंदर मेरे पास दो सर्कल रहेंगे, एक बोनेट रहेगा, टू यू नो रेक्टेंगुलर यू नो विंडोज रहेंगे, इट कुड प्रोबेबली बी कार, राइट? सो दीज आर फीचर्स, राइट? सो मशीन लर्निंग के अंदर फीचर्स आर हैंड क्राफ्टेड, okay, and that is where your domain knowledge is you know hand, okay. Deep learning के अंदर feature extraction is automatic, you don't have to do it. आप खाली एक इमेज दे दो, वो खुद ब खुद समझ लेगा कि ये अगर कार है तो इसके फीचर्स क्या है जिसकी वजह से इसको कार बनाया है, right? So that is the deep learning. Deep learning is, it takes a little more time, and there are, you know, different other characteristics about deep learning as well. Deep learning is not so simple. All right. And the another aspect, which is computer vision, right? So computer vision is one of the hot topic in under AI. Now, how computer vision is different, right? Why people are going to adopt computer vision? अभी अगर आप देखोगे एक human vision versus computer vision का, they have given a comparison, right? तो अगर एक fruit है, right? If it's tomato, right? अगर आप कैसे, हम लोग कैसे टमेटो को, यू नो, हाउ डू यू आइडेंटिफाई टमेटो, राइट? अगर आपके पास वो पिक्चर है, इट्स ऑलरेडी स्टोर्ड दैट इमेजिनेशन इनटू योर ब्रेन कि अगर ऐसा शेप का रेड, यू नो, रेड कलर का, इफ इट हैज, यू नो, ग्रीन टॉप ऑन इट, राइट, इफ इट्स राउंड, इट्स प्रोबेबली अ टमेटो, राइट? सो we understand a tomato using one of the sensory, you know, perception, which is eyes, okay, and that, so आपका input eyes से जाता है, the you know, your signals are then processed by brain, okay, and then it identifies that, boss, this is tomato, right? अगर आपको यही चीज, ठीक है, अगर एक मशीन से करवाना है तो आप कैसे करवाओगे, राइट? सो आप एक फोटो लोगे, राइट, टोमेटो का फोटो लोगे, then there will be a sensing device, ठीक है। अगर आप फोटो भी नहीं लेते हो तो लेट्स से, आई गिव यू एन एग्जांपल, आप लेट्स से डीमार्ट या तो बड़ी स्टोर्स वगैरह में चले जाते हो, स्टार बाजार वगैरह में चले जाते हो, ठीक है, एंड देयर आर, यू नो, शेल्व्स, वो शेल्व्स पे यू हैव केप्ट दीस, यू नो, फ्रूट्स, टोमेटो इज आल्सो देयर, ठीक है, और आपने वहां पे कैमरा लगा दिया है, राइट? सो यू कैन आइडेंटिफाई वेदर दैट शेल्फ कंटेन्स टोमेटो और नॉट, राइट? So कैसे करेगा, आपका कैमरा से it will keep you know, taking pictures, okay, and these pictures will be then sent to a computer. It will try and identify so it will try and identify using various algorithms. For these algorithms are primarily image processing algorithms, okay. So it tries, there are some techniques to process image processing algorithms, right, and वो use करने के बाद it will tell you that, boss, it has 84% chance that this is a tomato, 15% chance it is an apple, 1% chance it is a peach, right? So this is the computer vision. Computer vision is primarily on the images, right, or the video feeds, okay. Any questions before I move ahead? I think this is the second last slide, and then the last slide is how to transition, right? So I'll just quickly go through this one. Okay, so AI के अंदर क्या क्या रोल्स होते हैं, जिस हम लोगों ने डेटा एनालिटिक्स में देखा था, वैसा भी हम लोग AI के अंदर क्या क्या रोल्स होते हैं और क्या क्या सर्टिफिकेशंस करना चाहिए. There is not, I'll talk about this later. तो अभी डेटा साइंटिस्ट इज वन ऑफ द रोल्स, ओके. जैसा मैंने बताया, अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, राइट, तो देयर आर 3 aspects which you need to know, right? एक तो मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए आपको, राइट? कंप्यूटर साइंस यानी आपको प्रोग्रामिंग आना चाहिए, राइट? एंड एक तो है बिजनेस नॉलेज, ठीक है? सो देयर आर 3 layers which you need to know about it, okay?
अभी यहाँ पे देखोगे, so data scientist के अंदर what you do is that there are what are the different packages which you use, right? एक तो SaaS करके module है, right? SaaS is used heavily in the industry, right? But it is phasing out, okay, slowly. And इसको अगर आप अपने SaaS suites पे अगर काम किया है, SaaS visual analytics पे है, right? Base SaaS है, there are different other modules of SaaS. तो अगर उस पे काम किया है, तो I mean these are like very few people who have done SaaS in the industry, right? Few people, I mean, here you got around 10-15% of folks who are still, into SaaS, okay? And then the favorite is like R या तो Python करना, right? So ये तीन, so why I'm talking about these three is that इसके अंदर you have various machine learning algorithms, right? Various algorithms, statistics, hypothesis and all, which you can probably do. ठीक है, तो ये सारे languages, they give you libraries which you can use to test on that data, right? So you need to know R, Python, and then SAS to get into data science. Okay. When you talk about machine learning engineer, you need to know Python. When I say Python, Python is like a little different flavor of OOPS type of programming, right? So there are like different libraries which you primarily use जब आप एक machine learning engineer बनना चाहते हो, like scikit-learn है, stats, matplotlib है. So there are different libraries which you use. Again, right? फिर उसके बाद NLP engineers है. NLP engineers is natural language processing. जैसे हमने यहाँ पे बात किया, right? So this is natural language processing. Natural language processing करते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं, right? There is question answering. अगर जब if you see, अगर आप एक Flipkart या Amazon.com पे अगर एक chat पे जाते हो, right? Chat को जब एक बात करते हो, right? It asks you fundamental questions. Are you calling for your order? Whatever that is, right? So there is a predefined dialogue between a bot and you, right? So that is again, question answering, right? So that is NLP again, right? Then there is machine translation. Like for instance, अगर मैं Google पे जाता हूँ, and then if I would want to do English to Spanish, or let's say Urdu to a different language, right? So that is machine translation, and that is again natural language processing. Okay. So अगर आपको natural language processing या तो natural language understanding करना है, तो there are certain libraries in Python which you probably can use and do that. Okay. Computer vision again, Python से हो जाता है. There are algorithms which are available in few libraries. Python is like very powerful. उसके अंदर अलग-अलग libraries होती है to do different functions, right? For different algorithms, so it packages nicely, right? I mean, this is like a baseline flavor, but there are more advanced version as well. So अगर आपको advanced पे करना रहेगा, तो Python might not just be sufficient to do that. Okay, then you may need to do something a little more sophisticated. ठीक है, फिर उसके बाद algorithm engineers क्या करते हैं? They just work on math and वो खुद के custom algorithms बनाते हैं. This is primarily done by PhD folks, okay, जो के lab के अंदर बैठ के different algorithms बनाते हैं, recommendation system बनाते हैं, speech to text वगैरह के algorithms बनाते हैं. So these are like R&D types of folks. Okay. Then we talk about deep learning engineer. Deep learning is again, you use something known as PyTorch, Keras, TensorFlow, right? And then there is something from NVIDIA, right? NVIDIA, I mean, if you're doing, deep learning on the chip level, there is something known as CUDA, right? Which is a framework by NVIDIA, right? So if you know PyTorch and CUDA, I mean, it is one of the very niche skills, not easily available in the market, but if you have these two skills, you can easily be, it's easy for you to get into deep learning area, right? And if someone is already into machine learning or data science for past 2 years, right? तो वो लोग क्या कर सकते हैं? They can go for MLOps engineer. This is like very niche at the moment. Because क्या अभी market में क्या हुआ है, like it's been 2 to 3 years that people have started making models, right? Now they are trying to put that model into production.
अब जब प्रोडक्शन में डालना है तो उसकी जर्नी एकदम अलग ही होती है, एंड दैट इज वेयर MLOps इंजीनियर्स विल हेल्प यू, राइट? आपने जो मॉडल बनाया है, राइट, आपने जो मॉडल या एल्गोरिथम बनाया है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी वेरी डिफरेंट। आपका ऑन प्रेम भी रह सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड पे रह सकता है, डेटा सेंटर्स रह सकते हैं, राइट? So you need to have something known as, I mean, your model should be agnostic to your infrastructure, and that is where MLOps engineers help enterprises do that, right? So there are some tools known as Docker, MLflow, Kubeflow, etc., which is used. But if somebody is already data science or ML engineer, the next step should be MLOps. Okay. I'll just give you a good idea about what are the certifications which are available. कुछ certifications जो है, which I know personally, is like, and which are like really good. Okay, एक data robot करके company है. It has a very good certification for citizen data scientist करके. Okay, so that is a good certification. SAS has its certification, which is primarily उसके tool specific पे होता है. Okay, so SAS is also a good. It's been there in the industry for some time, right? And मैंने भी base SAS का certification किया हुआ, like 2014 के अंदर. Okay, then Google Cloud, right? GCP machine learning engineer के भी certifications हैं. Very good, right? So I think इसके अंदर एक second level का भी आया हुआ है certification, but this is like good. This certification आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि you would want to validate कि इंडस्ट्री में बेंचमार्क क्या है. Are you passing that benchmark, right? Are your concept that crystal clear, right? इसके लिए ये सर्टिफिकेशंस करना चाहिए. Okay? अगर आपने ये सर्टिफिकेशन कर लिया तो I think cracking interview is not a big deal. I'll just skip through this one. Okay. Now I'll talk about how to transition, right? So let's say there are different personas. अभी हम लोग के पास कुछ लोग आते हैं जो कि 12th स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं, कोई लोग ग्रेजुएशन के लोग होते हैं, राइट? कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो बीकॉम के बैकग्राउंड से होते हैं, दे आर वर्किंग इन फाइनेंस फॉर 2 to 3 years, दे वांट टू गेट इनटू मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ठीक है? एंड देन कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कि इंजीनियर्स है, जो कि .NET वगैरह में काम करते हैं, उनको डेटा साइंस में आना है, राइट? एंड कुछ लोग होते हैं जो कि 10-12 साल हो गए इंडस्ट्री में, दे आर वर्किंग ऑन द लेगेसी, उनको आर्किटेक्ट लेवल पे अगर जाना है, राइट, डेटा साइंस के अंदर वगैरह, तो हाउ डू दे ट्रांजिशन, राइट? सो देयर आर डिफरेंट पर्सोनास, ठीक है? तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप बैचलर्स, if you are at the stage जहाँ पे आपको बैचलर्स की डिग्री है, ठीक है, आपके पास, I mean, you would want to get into bachelor's, right? So आप क्या कर सकते हो? BSc statistics कर सकते हो, and उसके बाद MSc statistics कर सकते हो, right? BSc statistics, most of the universities in Mumbai they have it, okay? MSc statistics, there are few few colleges in Mumbai have it. IIT Mumbai के अंदर भी है. If you do MSc statistics from IIT Mumbai, it's like nothing, right? You get recognized with an IIT brand, and it's not that difficult. I've seen folks getting into MSc statistics from IIT. Okay, then you have Kalina University भी है, you have NMIMS maybe MSc statistics होता है, right? My recommendation is that you should do BSc and MSc statistics together. खाली BSc statistics करके छोड़ना नहीं चाहिए, okay? Let's say then if you are getting into BE, right, आपको engineering करना है, there are certain colleges which are offering programs in AI and analytics, okay? NMIMS is one of them, and there are KJ Somaya and all that, right? Sardar Patel is offering ME. There is a student from Moeen Sunesera, I think, who has done ME, if I'm not mistaken, from Sardar Patel, right? I'm not sure whether it is a ME or it is an MBA, right? But and then he got an opportunity into data science. He was into a different organization, and then he was into a software development, and then वो data science के अंदर आया वो course करने के बाद, right?
And then there is MBA in business analytics. So let's say agar aap say marketing manager ho, right, agar if you would want to, agar BCom ke students ho, right, if you're trying to do if you do MBA with analytics flavor, you can definitely get a job in that area, right, in the data science and the business analytics area. Okay, so ये जो तीन है, these are degree courses, these are degrees or master related courses. Okay, first three. And then the next three are for those जो लोग 2-3 साल काम किया है, right, बीकॉम के बाद उसने किसी ने अकाउंटिंग के अंदर काम किया है, किसी ने प्रोग्रामिंग के अंदर काम किया है, किसी ने मार्केटिंग सर्च डिजिटल मार्केटिंग स्पेस के अंदर काम किया है, राइट, or they want to get into data analytics and AI, right? उनके लिए क्या है, right? So there are what I categorize is market के अंदर there are 3 types of institute, right, or 3 types of avenues, right? एक कंपनीज ऐसी है जिनकी फीस थोड़ी हाई होती है, जैसे कि $1-2 lakh रुपया फीस होगी, राइट, अपग्रेड एंड स्प्रिंग बोर्ड, राइट, सो इनके प्रोग्राम्स आर ऑन अ हायर एंड, इनकी फीसेस होती है 1-2 लाख रुपया, ओके, बट इनके प्रोग्राम्स काफी अलग होते हैं, राइट, इनके प्रोग्राम्स के अंदर आपको वन ऑन वन मेंटरशिप मिलती है, राइट, इनके प्रोग्राम्स के अंदर जॉब गारंटीज वगैरह मिलती है, राइट, सो they offer all that, okay, as apart from giving you capstone projects and then explaining you कि data science वगैरह क्या क्या है, all that, right? So that is one segment. Second segment is on this lower end, which is like अगर आपके पास 50,000 है, right, 30,000 to 50,000 INR, right? So आप ये these are really 2 good institutes which I'm personally aware of, Analytics Vidya and Jigsaw Academy. आप यहाँ से कर सकते हैं, राइट, अगर आपका बजट कितना है. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आपके पास पैसा कितना है, आपके पास टाइम कितना है, राइट. अगर आप फुल टाइम कैन नॉट, आई मीन पार्ट टाइम कैन नॉट बीट फुल टाइम, राइट. सो अगर आप फुल टाइम एमबीए वगैरह करना चाहते हो, एमएससी करना चाहते हो, दैट शुड बी द फर्स्ट मूव, ओके. अगर आप वो नहीं करना चाहते हो तो यू शुड प्रोबेबली गेट इनटू द सेकंड एवेन्यू, राइट, जो कि पार्ट, आई मीन इट्स लाइक अपस्किलिंग योरसेल्फ, ठीक है. और आपका बजट कितना है, अगर आपका बजट 2 लाख रुपया है, 1.5 लाख रुपया है, देन यू कैन इन्वेस्ट इन ओवर ईयर, ठीक है, और उसका रिटर्न्स भी आता है, ओके. इट्स नॉट दैट इट जस्ट आपको कितना स्पेंड करना है बेसिकली, राइट. तो सेकंड इज एनालिटिक्स विद्या जिक्सा एकेडमी, जहाँ पे आपको 30,000 से 50,000 के बीच में यू विल गेट डिफरेंट कोर्सेज, राइट. सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एस्टिमेट, ओके, कि इसके बीच के अंदर कोर्सेज आपको वहां पे मिल जाएंगे, राइट. And then there is something, if you have something around, let's say less than 10,000, ठीक है, 500 to 10,000 के पास आपके पास you have some budget, then there is something known as Udemy or Coursera, right. So वो वहाँ पे जाके, this is more of a self serve or self learn, right. आपको खुद को टाइम डाल के, there is a recorded video and all that, just like what you do on YouTube, right. So but this is more constructed, defined guideline from an industry expert. तो आप मूव वगैरह पे जाओगे, Udemy वगैरह पे, Coursera वगैरह पे, there are plethora of courses which are available. You just need to pick आपको कौन सा वाला अच्छा जो लगता है, राइट. या तो आप you can ask, राइट, आप MWF में भी पूछ सकते हो कि मैंने ये जगह पे जाके इंक्वायरीज की है, this is my understanding, what is your opinion, right? So you can come back to us and we can probably help you out, ठीक है. एक बार आपने so when I say data science and AI and data is not like doing a Java certification from NIIT, right. पहले तो कैसा रहता था कि आपने Java certification या Oracle certification कोई इंस्टीट्यूट से कर दिया, तो they used to give you a job placement. It was lot easier. एक बार certification कर दिया, then you got a job, right? यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. You have to build up your case, okay? आपने knowledge acquire तो कर ली, right? Now you need to establish, right? आपको establish करना पड़ेगा resume के अंदर और community के अंदर. मैंने ऐसे community, it is about data science community, data analytics community, right? So how do you do that, right? So first way to do that is that you have to do certification. Certification आप इसके लिए नहीं कर रहे हो कि आपको दूसरे दिन जॉब मिल जाए, right? आप इसके लिए certification कर रहे हो, you would want to benchmark on what the industry is expecting people, right? कि आपको ये level का understanding concepts, theoretical जो भी है, right? You know that, okay?
So pick one certification, and I'll just give you my example. मैंने 5 साल Oracle programming किया है, backend developer था, right? SQL, PL SQL, advanced PL SQL. उसके बाद I went on to Jigsaw Academy. I did one of the courses from there. Then I went into SAS certification. I gave some of unsuccessful interviews, right? But I just wanted to have that experience. ठीक है, मैंने किया, and then eventually I got a break from within my organization to get into there, right? Into data science, and it's been like 6 to 7 years. I've been into that space. Okay, so the idea is that आप certification करने के बाद आपने course में 30,000 40,000 रुपया डाला है, right? You have to be patient, right? You have to keep on persisting yourself. You have to keep telling industry. You have to do networking and keep pushing your case. If you do that, inshallah, one fine day you will get a job in the different role which we talked about. ठीक है, आपने certifications किया, और I would also suggest that आप एक book लो, and while you are preparing for certification, अब वो study guide या book के अंदर से छोटे छोटे concepts होते हैं, right? जो कि इंटरव्यू के अंदर लोग पूछते हैं, just to understand कि आपको कितना level of clarity, right? Are you able to understand कि आप, there are some areas which are little gray, right? Are you able to make some decisions, or how is your understanding on that side of the world, right? So अगर आप books पढ़ोगे, study guides करोगे, certification करोगे, it would be lot more clearer to you, right? उसके बाद let's say आपने certification वगैरह कर लिया, right? उसके बाद क्या? Then there is something known as public technical profile and collaboration, right? So इसके अंदर क्या होता है कि there are some open source community platform, right? GitHub है, Stack Overflow है, अगर आप BI developer हो तो there is Tableau community, right? So आपको क्या करना है, आपका email ID, आपका profile बनाना है Stack Overflow पे या GitHub पे या तो Tableau community पे, and then लोग किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो Stack Overflow पे वो question पूछता है, you have to help him, right? You have to answer his question. अगर आपका आंसर उसके क्वेश्चन का बराबर जवाब था, तो then you get points, right? You get recognized onto the community platform, and then you can include these links, okay, or profiles onto your resume, saying that, boss, I've done certification, I have helped people, on the communities, platform perspective. Okay, so when people look at this, even if you don't have experience, they would give you a chance. कि boss, इसने बहुत सारा कुछ किया हुआ है from his side. ठीक है? So that is where it helps. And ये collaboration platform पे, the other thing is that you do networking, right? With other people. Okay, आप consistently किसी को help कर रहे हो वहाँ पे, आपका वो networking बन जाता है, and then you may get an opportunity from that platform itself. ठीक है? And there फिर कुछ क्या होता है, कुछ platform ऐसे होते हैं जहाँ पे they keep a competition, right? अभी एक company है, right? एक company को एक problem solve करना है, fraud detection का problem solve करना है, उसके पास data scientist नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है, कैगल करके प्लेटफॉर्म है, गिविंग एग्जांपल, राइट? वो कैगल के प्लेटफॉर्म पे जाके अपना डेटा वगैरह देंगे, व्हाट दे विल आस्क डेटा साइंस कम्युनिटी दैट 2 हफ्ते के अंदर इफ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अगर आपने मशीन लर्निंग मॉडल बनाया है, अगर आपका मशीन लर्निंग मॉडल एकदम टॉप क्लास का रहेगा, देन आई विल गिव यू 10,000, राइट? सो देयर आर some monetary benefits as well, right? But we should do it just to ensure that how do you get to that top level? You just constantly, so all these 3 stuff, right? 1 2 3, it is all about benchmarking yourself, all about trying to establish yourself in the community, right? अगर आपने इतना सारा कर लिया तो I am sure inshallah you will definitely get a chance and opportunity to get into the ecosystem. Okay? And then there is a smaller aspect, जैसे कि आप किसी ने वेबिनार कर लिया, राइट? एक डेटा रोबोट का कोई बड़ा बंदा है, राइट? वो he is conducting a webinar, right? अगर किसी ने वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा है, कोई कॉन्फ्रेंसेस है, राइट? कॉन्फ्रेंसेस के अंदर 5,000 का टिकट लेके इफ यू मीट, राइट, you do networking. So this is mostly about trying to keep updated about what's happening in the community and trying to do the connections, right, with who's already doing AI, data science or whatever in the industry, right? So आप ये भी कर सकते हो, and then there is LinkedIn पे followers or blogs, right? So there are some folks who keep
publishing really good insights on LinkedIn, right? And they keep publishing posts which are really helpful. So blogs or posts वगैरह उनके followers, yeah, right? So if you inshallah try and do all this, I'm sure inshallah it will be easier for you, right? And मैंने कितना I myself have seen from my organization and outside of organization, people have done these steps and it has definitely helped. It is only about your persistence and patience. अगर आपने ये दोनों चीजें रख ली you will definitely inshallah get on the other side. Okay, it's all about the timing, right? The market is hot. If you act now, आप कर सकते हो. I'll just give you a case. मेरे पास एक I had a mentee, right? Who was from naval background. ठीक है, उसने नेवी के अंदर 10 years उसने serve किया and then he got retired and he is getting into a data science, right? Very unique case, but people from various backgrounds are getting into data science. Okay, all right, any questions? I'm a student presently pursuing programming and data science from IIT Madras. Is there any specific question that I can help you with, Haris? I think we spoke, if I'm not mistaken, Haris. You have a BCom background, if I'm not mistaken. ठीक है, अब आपको कुछ क्वेश्चन देगा, आप चैट में बता सकते हैं. Okay, what to do first stack developer or data science? I think so can you, okay, this is the question from Haris itself, right? So can you give a background, what is your case, and then I can probably give you a suggestion which suits you a lot better, rather than मैं आपको बोलूं कि आपको जो सब लोग करते हैं वैसे ही करना चाहिए. नहीं, कभी-कभी किसी लोग को you need to understand strengths, right? Some guys are more comfortable with programming. Some guys, they don't like programming, they just like drop downs, UI, right? But I would definitely want you to, I mean, अगर कोई भी आता है, अगर एक fresher है, I will ask him to do programming and database management for a year or two, and at the same time keep doing in parallel data science, right? So that it's easier for you to understand, because आप जब प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको पाइथन आ जाता है, राइट? आप डीबीएमएस करते हो तो आपको सीक्वल आ जाता है, राइट? एंड दीज टू आर प्रीरिक्विजिट, आई वुड से, फॉर डेटा साइंस, राइट? डेटा साइंस के अंदर आप एल्गोरिथम्स लर्न. ओके, Faiz, Assalamualaikum. By great presentation, Jazakallah. Thanks to the, it's our pleasure to serve the community, man. If you have any questions, please let me know. Haris, I think you can unmute yourself and you can elaborate your question. Assalamualaikum, Moeen bhai. Hello, am I audible? Yeah. Yes, you are. Yes, actually, I will go to my background. So presently, I am working in an engineering company looking after logistics and indirect taxation. I think I already earlier also had a discussion with Moeen bhai. So I am at present pursuing a course from IIT Madras. It's I think programming and data science course, and I'm in the first year now. I think I will complete the first year in this term, and I have a subjects of like maths, statistics, and intro to Python. So from next year, there is a diploma level, and in diploma there are two diplomas. First is diploma in programming, and there are 6 subjects in total, and there is second is diploma in data science. In that, all machine learning subjects are there. So I wanted to know what to do first. Should I go in diploma in programming, do the DBMS, Java, these data structures and all that algorithms, or should I switch to diploma in data science and learn machine learning and all that theory, machine learning practice first? If I am not mistaken, Haris bhai, आपका background BCom से है, correct? I had done a BMS, Bachelor's in Management Studies. I am already in
working professionals for last like 7 to 8 years. Okay. And आपने प्रोग्रामिंग किया है आपका 7 to 8 years career में, like Java programming, scripting? No, it's all fresher. Now I'm learning. Like I did get your first diploma जो first year है, it is primarily on data structures and programming. But what yes, so the part of course they have developed the second year is like they have 2 parts. They are diploma in data science and diploma in programming. नहीं so अगर let's say आपने डिप्लोमा जो फर्स्ट ईयर डिप्लोमा है, राइट, तो आपने ये वाला you have done that, right? अगर आपने ये no I'm still in the first year foundation first year like it's a 3 years course, and I'm still in first year. Like I have completed 7 subjects. All subjects were related to maths, like math, this linear algebra, maths, and all the statistics, probability, and all that. And now currently the subject what I am studying is Introduction to Python. अच्छा. This term, my term will end in March, and from next term I will be in the second year. In that I have options like what to do: diploma in data science subjects. आप मुझे थोड़ा और आगे का बता सकते हो कि आपके थर्ड ईयर में क्या है? आपको पता है थर्ड ईयर में आपका third year is more of AI, deep learning, and there are options like this. What use inform like the these. Speech speech recognition and this computer vision, all that subjects are there in the third year. So मैं ये बताना चाहूंगा कि आपका इंटरेस्ट क्या, आपको डेटा साइंस में जाना है या डेटा में जाना है? Actually I am more like an amateur in this field. I am still learning, so I want to know from your end what is better in the market and what should I want to do first. So let's do this. So what I believe is that if you are really interested in data science, which we can understand a lot more with an offline discussion, right? So what I would suggest is that आपका जो second year जो चालू होगा, right? ये अभी आपने जो खत्म किया है, second year आप data science कर सकते हो, right? And simultaneously जो ये skills है, right? आपकी you can do it offline, right? आप ये जो database वगैरह का है, right? वो आप Coursera वगैरह में भी कर सकते हो, right? So those courses are like $1,000, 1,000 INR. We are 2,000 INR, okay, on Coursera, but you don't have to do a specific course for that. आप data science कर सकते हो because आपका जो इसके बाद वाला है, it is all in AI, right? So that will probably make more sense, and this is something you don't have to miss out. You can do that parallelly on the these MOOC platforms जो मैंने बताया ना यहाँ पे वैसे. But let's talk offline. हम लोग बात कर सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा और कुछ queries है कि what will be your role, right? Because आपने programming किया नहीं है, right? तो अगर ऐसा देखो, so there are 2 types of people, right? One, people who come in from a programming background, right? So they can create the model using Python and all that, right? And then there is, let's say, अगर आप marketing background से आते हो या sales background से आते हो, you can still use tools like Data Robot, SAS, driverless H2O.ai, right? And you can create models, right? So you already have a software and you can do that, but you need to know the concept of data science and AI and all that, right? So I think the part which is more accustomed, you can keep programming as secondary, but ensure that you are learning that from these platforms, MOOC platforms. Yeah, MOOC refer कर सकते हो, okay? It should not be a big challenge. But if you are investing your money, invest in data science and AI, so you learn it properly, okay? Programming तो फिर आप बाहर से भी पढ़ सकते हो. Okay. But if I am doing like a machine learning subjects, then these like DBMS and all this algorithms, BS, data structures, is it compulsory to learn beforehand, or we can progress with machine learning without these subjects? आप देखो there are 2 types. इसके लिए मैं बोला, right? एक कैसा है कि आपने जो बताया ना यहाँ पे आपका पाइथन, यहाँ पे प्रोग्रामिंग में आप पाइथन सीखोगे या तो जावा सीखोगे, और डीबीएमएस में आप एसक्यूएल सीखोगे, राइट? अगर आपके पास डेटा साइंस करने के लिए अगर आपके पास डेटा रोबोट या तो ड्राइवरलेस H2O करके टूल्स नहीं रहेंगे, तो आपको ये सीखना पड़ेगा, because there are 2 ways to do it, right? Algorithms. One is through drag and drop kind of a software tools, okay?
अगर वो नहीं है, right, if you don't have the licensed software, if you have to manually do it, you have to use programming languages which you can learn later. आप बाद में भी सीख सकते हो, right? But from a course continuity perspective, I would suggest आप data science, machine learning, और उसके बाद because आपने अगर ये कर लिया, right, ये करने के बाद अगर आप सीधा AI करोगे तो आपको continuity आपका maintain नहीं रहेगा, okay? So I would prefer data science करो, फिर उसके बाद AI वाला course करो, which is the next semester, third last semester, right? Okay, thank you, Moeen bhai. Yeah, next question we have from Faiz Nandolia. Moeen bhai. I am mechanical engineer currently doing a job for last 3 years and yet to find anything. I'm mechanical engineer currently doing a job for last 3 years and yet to find anything concrete. And I would like to know if I switch to data science or is it too late now? I don't have any program anywhere. So can you give me a little context on what is your current job role, right? हेलो अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई. Yes, yes. मोइन हाँ मोइन भाई, मैं अभी एक्चुअली एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर काम कर रहा हूँ और मुझे ये लाइन में कोई ग्रोथ भी नहीं दिख रही और लॉकडाउन की वजह से मुझे कोई नया जॉब भी नहीं मिल रहा और 3 इयर्स में सेम जॉब पे आई एम स्टक. तो ये डेटा साइंस के बारे में मैं पढ़ रहा था कि यानी फ्यूचर में बहुत स्कोप भी है, ये भी है, तो स्विच करने का सोच रहा था. तो मैंने अरशद भाई से भी बात की तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि संडे को मोइन भाई का ये वेबिनार है, अटेंड करो, उसमें आप क्वेश्चन पूछ लो, फिर आपको यानी कुछ क्वेरीज रहेगी तो फिर बाद में पूछना. तो मुझे ये पूछना था कि अभी मैं करूँ क्या. मुझे प्रोग्रामिंग का तो जीरो नॉलेज है, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स आई कैन हैंडल, बट प्रोग्रामिंग में मुझे जीरो नॉलेज है. तो स्विच करना चाहिए या फिर जो मैं मैकेनिकल लाइन में उसमें कुछ आगे दूसरा स्टडी करूँ. आई कैन गिव यू सजेशन, ठीक है? कैसा रहेगा ना फैज भाई, आप ऑटोमोबाइल के अंदर रहो या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हो या एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर हो या तो नेवी के अंदर हो, राइट? एनी इंडस्ट्री, राइट, विल गो अ ट्रांसफॉर्मेशन वेयर एआई विल बी यूज्ड, एआई और डेटा साइंस विल बी यूज्ड, ठीक है? तो इसको अभी जैसे मैं बता रहा था एक सेशन के अंदर, मेरे पास एक स्टूडेंट था जो नेवी के अंदर 10 साल, इंडियन नेवी के अंदर 10 साल काम किया, राइट? सो आई वाज इन्फॉर्मिंग हिम, राइट? ऐसा नहीं है कि वो जो 10 साल नेवी का उसने किया है दैट इज अ वेस्ट, वी डोंट डू लाइक दैट, राइट? आप देखोगे, आई विल जस्ट शो यू सम, अपने आप देखोगे ये डेटा साइंस क्या है, राइट? डेटा साइंस इज, देखो, आपको कंप्यूटर साइंस, आपने इंजीनियरिंग किया, राइट? यू ऑलरेडी नो दिस, ओके? आप मैकेनिकल के अंदर हो, राइट? दैट इज योर डोमेन, मैकेनिकल, ओके? सो मैकेनिकल और व्हाटएवर लाइन यू आर, राइट? अगर मैं नेवी के अंदर हूं तो आई नो, सो दैट इज द डोमेन नॉलेज, राइट? सो आप मैकेनिकल के अंदर हो तो आपको डोमेन नॉलेज मैकेनिकल की लाइन का है, राइट? यू जस्ट नीड टू कैच अप ऑन मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड एल्गोरिथम, राइट? इफ यू गेट ऑल दीस 3 थिंग्स टुगेदर, you are able to do a data science, right? And ऐसा देखो, इसके लिए इन लोग ने, आप जहाँ पे भी डेफिनेशन में जाओगे, you need to know domain. So domain is an experience counted. So आपने 3 साल मैकेनिकल में काम किया है on the ground, that is not wasted even if you get into a data science. Okay. You got the point? ठीक है? Programming is not a big thing. आपने C++, Java वगैरह इंजीनियरिंग में किया रहेगा, you will do it. Okay? और मैकेनिकल के अंदर आप कितने बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल आईओटी वगैरह के जो सिस्टम्स वगैरह लगते हैं, राइट? उसके ऊपर जो डेटा जनरेट होता है आईओटी डिवाइसेस वगैरह से, सेंसर्स से, दे डू डेटा साइंस ऑन टॉप ऑफ दैट, राइट? जो अपना जो ये जो लेट्स से इफ यू आर डूइंग अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह का जो करते हो, राइट? सेटअप वगैरह, डाउन टाइम वगैरह प्लान करना रहता है, सो उसके अंदर भी यू यूज डेटा साइंस, ओके? इफ यू आर डूइंग स्ट्रक्चरल एनालिसिस, राइट? अगर स्ट्रक्चरल एनालिसिस या प्लानिंग वगैरह करते हो, यू यूज कंप्यूटर विजन, राइट? सो आपको डेटा साइंस उतना ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होगा जितना एआई रहेगा, राइट? देखो एआई के अंदर आप यहाँ पे कंप्यूटर विजन है ना, जो एआई के अंदर इमेज रिकग्निशन, मशीन विजन, राइट? सो दैट इज समथिंग व्हिच विल बी मोर रेलेवेंट in mechanical rather than data science, but it all starts with data science, right? So you understand machine learning, data science, and then you understand computer vision, right? इसके लिए मैंने आपको ये बताया, देखो यहाँ पे, right? So
So you can definitely do that. ऐसा नहीं है कि आपका जो 3 साल जो आपने किया है काम, that would be wasted, right? So कुछ industry के अंदर they specifically look at your domain knowledge, and that counts to your experience, right? So it is not wasted. You can still go ahead and you can find something which is relevant, right? और मैं आपको example, आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से आप बॉश वगैरह जैसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, जस्ट गिव एग्जांपल, ठीक है? तो कोई बड़ी कंपनीज के अंदर क्या होता है ना, दे हैव दैट R&D डिपार्टमेंट या AIML डिपार्टमेंट होता है, राइट? डेटा साइंस डिपार्टमेंट होता है. आप एक फंक्शनल डिपार्टमेंट के अंदर हो जहाँ पे आप मैकेनिकल के रोल पे आप काम कर रहे हो, राइट? And then you can always ask your manager that now I would want to get into that skill, right? So आप वो डिपार्टमेंट इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर भी ले सकते हो, right? And that is the best way to get into an actual real time projects, right? कभी क्या होता है कि बड़ी कंपनीज के अंदर है ना, they give a problem, they have something known as hackathon, right? So वो hackathon वगैरह के अंदर they internally post, you can participate, you can make connects within your company, right? So कि आपने डेटा साइंस AIML वगैरह कर लिया, अभी मुझे जॉब अप्लाई करना है, नेटवर्किंग करना है, तो वो these are the forums, right? And as I mentioned, domain background is never wasted, right? You just have to play your card accordingly. अगर आपने आपका रेज्यूमे कैसे प्रेजेंट किया किसी के सामने, that makes it count. So I would suggest आप ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, डेटा साइंस या AIML का कोर्स किया, you find a job in the same industry, right? बट आपका रोल चेंज हो जाएगा, राइट? आप अगर लेट्स से आप अभी कुछ रोल ए कर रहे हो, तो द रोल बी विल बी इनटू डेटा साइंस इन मैकेनिकल फील्ड itself, right? And then that will be a concrete 3 to 5 years additional, right? So वो 6 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, and then you can switch into any different industry if you want. तो भाई मैं अभी स्टार्ट कैसे करूँ? यानी अभी मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हूँ, एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर काम कर रहा हूँ, तो अभी मैं फर्स्ट थिंग या प्रोग्रामिंग सीखूँ या फिर ये देखो, ये है ना, आपने ये जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, राइट? देखो आप ऑलरेडी जॉब करते हो, राइट? सो ये पहले आपके पास ये हो सकता है कि आप मास्टर इन इंजीनियरिंग फुल टाइम कर सकते हो. आई एम नॉट श्योर वेदर दैट इज एन ऑप्शन. अगर आपके पास ऑप्शन है मास्टर्स करने का, यू शुड डू दैट, ओके, फुल टाइम, ओके? अगर वो ऑप्शन नहीं है, यू वुड वांट टू आपको जॉब भी करना है, आपको अपस्किल भी करना है, सो अपस्किल के लिए आपके पास ये 3 ऑप्शंस है, राइट? नाउ ये 3 ऑप्शंस में से आपके पास बजट कितना है, राइट? आप एक साल में 2 लाख रुपया, कितना, 50,000 रुपया या 10,000 रुपया कितना डालना चाहोगे, राइट? अगर आपके पास 1.5-2 लाख रुपया है, तो आप ये वाले इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हो, राइट? यू कैन लुक देम अप, राइट? अपग्रेड और स्प्रिंग बोर्ड, दे आर वेरी रिनाउंड. अगर वो नहीं है तो एनालिटिक्स विद्या जिक्सो एकेडमी, राइट? दैट इज आल्सो गुड. अगर वो नहीं है तो दिस आई वुड सजेस्ट फॉर यू, लुक अप फॉर एनालिटिक्स विद्या एंड जिक्सो एकेडमी, ओके? गिवन दैट आपने प्रोग्रामिंग नहीं किया है, दिस इज अ सूटेबल ऑप्शन. इनके कोर्सेज शुड बी समवेयर अराउंड 30,000 to 50,000 INR. ओके, आपने एक बार ये चालू कर लिया, फिर उसके बाद आपने सर्टिफिकेशन दिया, एंड देन देयर आर डिफरेंट स्टेप्स, राइट? सो आप कोर्स 3 महीने में कर लिया, राइट? देन सर्टिफिकेशन के लिए 2 महीना कर लिए, राइट? दैट इज बेस्ड अपॉन हाउ यू वुड वांट टू डू, राइट? एक बार आपने चालू कर दिया, देन यू विल डेफिनेटली सी द पाथ अनरोलिंग इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, सो इसका स्नैपशॉट ले लो, जस्ट कीप दैट, ले लिया वो तो सर. and we can be connected, right? ये forum पे, whenever you have, जैसा हारिस बता रहा था, right? Me and Haris spoke like 3 months, I mean 6 months back, okay? And he was trying to get into that, and we went through the same pattern, okay? So आप भी चालू कर सकते हो, and let us know what is your feedback, what is आपने जो R&D किया, आपको क्या लगा, right? And then we can definitely inshallah guide you. Okay. तो सर आपका ईमेल आईडी कुछ है तो मैं आपको कांटेक्ट कर सकता हूँ जिससे गाइडेंस के लिए? आप MWF में हो ना, वो ग्रुप पे? हाँ, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन डाल दो, I'll definitely inshallah respond on that and get on to a call and discuss about it. ओके, ठीक. जज़ाकल्लाह. Any other questions? I see no more question on chat. Okay, any further questions?
Okay, it seems no more questions. So Moeen bhai, very thank you much. This was very knowledgeable and very informative sessions. I think people has enjoyed this session. And before we end up our today's session, just MWF के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ. MWF में अगर आप लोग में से किसी ने MWF में रजिस्टर नहीं किया, हमारी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाकर आप रजिस्टर कीजिए. अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप एज ए स्टूडेंट रजिस्टर कर सकते हैं, एज ए प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल कर सकते हैं. तो नेक्स्ट सेशंस या नई कुछ और एक्टिविटीज होती है MWF की तरफ से तो आपको वो इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी. और दूसरा, हमारी वेबसाइट पे एक्सपर्ट डेटाबेस भी है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं. आपको कुछ सजेशन गाइडेंस चाहिए पर्टिकुलर फील्ड में तो वो एक्सपर्ट डेटाबेस आप रिफर कर सकते हैं. मैं वो सारे लिंक में चैट में पेस्ट कर दूंगा. और उसके अलावा हमारे कुछ प्रीवियसली सेशंस हुए हैं, वेबिनार्स हुए हैं, उसकी वीडियोस भी है. इफ समवन इज इंटरेस्टेड दे कैन आल्सो गो थ्रू दोस वीडियोस. और इन केस एनी हेल्प चाहिए, कुछ MWF का कॉन्टैक्ट भी है, ईमेल भी है, मैं सारी चीज़ें मैं चैट में डाल देता हूँ. और इसके अलावा अगर MWF जो है वो हम सब ने मिलके बनाया है, ठीक है. हम भी एक वक्त के स्टूडेंट थे, ठीक है. आज आप स्टूडेंट हो गए, शायद प्रोफेशनल हो गए. अगर आप कुछ पार्टिसिपेट करना चाहते हो MWF की एक्टिविटीज में, ऐसे वेबिनार्स के थ्रू या ऑन ग्राउंड या ऑफलाइन एक्टिविटीज कुछ करना चाहते हो आप MWF के लिए, वुमेन कम्युनिटी के लिए, तो आप अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हो. यू कैन रीच आउट टू MWF कॉन्टैक्ट नंबर टू मौलाना तौफीक, और आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो, ठीक है. तो मैं ये सारी इंफॉर्मेशन मैं चैट में पेस्ट कर दूंगा, सो दैट आप नोट कर सकते हो इसको. ओके, इसके अलावा लास्ट चांस, इफ एनीवन हैज एनी सजेशन, एनी क्वेश्चन बिफोर वी क्लोज दिस कॉल. ओके, आई विल टेक एज ए नो. मैं बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस कॉल में ज्वाइन करने के लिए, इस वेबिनार में ज्वाइन करने के लिए. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.